Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Today I'm here with another topic of economics. Firstly, let's recall the general overview of economics. Economics is the social science that is concerned with production, distribution, and consumption of goods and services. And you all know that goods and services are all those things which we can utilize to fulfill our basic needs. Alright, so today our main topic is the indifference curve approach. हम देखेंगे indifference curve approach क्या होती है and how we can draw indifference curve. Alright, so here is the introduction of indifference curve. हम देखते हैं कि indifference curve का introduction क्या होता है. An indifference curve is a chart showing various combinations of two goods and commodities that leave the consumer equally well off or equally satisfied, hence indifferent. When it comes to having any combination between two items that is shown along the curve. Alright, so हम two commodities, two goods की बात करते हैं जिसमें consumer जो है equally satisfied होता है उन दोनों गुड्स से, बट दीज टू गुड्स आर टोटली इनडिफरेंट. ठीक है, इनडिफरेंट थिंग्स से, गुड्स से, कमोडिटीज से कंज्यूमर की इक्वली सेटिस्फेक्शन हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व में. ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में. एन इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन वेरियस क्वांटिटीज दैट प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी to an individual. It is used in economics to describe the point where individuals have no particular preference for either one good or another based on their relative quantities. Alright, so an indifference curve is a curve that represents all the combinations of goods that give the same satisfaction to the consumer. Since all the combinations give the same amount of satisfaction, the consumer prefers them equally. Hence the name indifference curve. Alright, so here's the example to understand the indifference curve better. A person has 1 unit of food and 12 units of clothing. Now we ask that person how many units of clothing is he willing to give up in exchange of for an additional unit of food so that his level of satisfaction remains unchanged. Person agrees to give up 6 units of clothing for an additional unit of food. Hence we have two combinations of food and clothing giving equal level of satisfaction to that person as follows. 1 unit of food and 12 units of clothing, 2 units of food and 6 units of clothing, 3 units of food and 4 units of clothing, and up to so on. Alright, so here we all see on the screen a graph of consumers indifference curve. ठीक है, अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास फूड का यूनिट है ना, 1 2 3 फूड के 1 यूनिट पे हमारे पास जो क्लोथिंग का यूनिट है वो 12 है. अब हमारे पास जो यूनिट है वो चेंज हो रहा है, बट इक्वल द कंज्यूमर हैज़ इक्वल सेटिस्फेक्शन एट एवरी पॉइंट ए बी सी डी. ठीक है, और ये हमारे पास आईसी कर्व की लाइन शो हो रही है ग्राफ के ऊपर. ठीक हो गया. द डायग्राम शोज एन इंडिफरेंस कर्व. एनी कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन दिस कर्व गिव्स द सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर. हर पॉइंट पे कंज्यूमर का पॉइंट तो चेंज हो रहा है. जैसे 1 यूनिट पे 1 यूनिट ऑफ फूड पे 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग है, 2 यूनिट ऑफ फूड पे 6 यूनिट ऑफ क्लोथिंग है पॉइंट बी पे, और 3 यूनिट ऑफ फूड पे 4 यूनिट ऑफ क्लोथिंग है पॉइंट सी पे. एट एवरी पॉइंट कंज्यूमर हैज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं कि ये हमने देखा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. ठीक है, हमने देखा इंडिफरेंस कर्व हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है. ठीक हो गया. एन इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. It depicts the complete picture of consumer preferences. The following diagram shows an indifference map consisting of 3 curves. ठीक है, 3 curves हमने ड्रॉ करके यहाँ पे बताया हुआ है कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है. इसमें काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व्स हमारे पास ड्रॉ होते हैं, जैसे गुड वाई और गुड एक्स हमने लिया हुआ है. अब जो IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, IC2 shows indifference curve 2, IC curve 3 shows indifference curve
3. ठीक हो गया? We know that consumer is indifferent among the combinations lying the same among the combination lying on the same indifference curve. However, it is important to note that he prefers the combinations on the higher indifference curve to those on the lower one. ठीक हो गया? This is because the higher indifference curve implies a higher level of satisfaction. Therefore, all combinations on IC1 offer the same satisfaction, but all the combinations on IC2 give greater satisfaction than those on IC1. ठीक हो गया? यहाँ पे अब हमने देख लिया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और हम उसको ग्राफ पे कैसे डिराइव करते हैं, और अब हमने ये भी देख लिया कि ऐसे कर्व के ऊपर हमारे पास हर पॉइंट पे कंज्यूमर की इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रही है, और गुड्स हमारे पास जो कमोडिटीज़ हैं वो बेशक चेंज हैं, गुड एक्स गुड वाई कोई भी कमोडिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है? और इंडिफरेंस मैप हमने देख लिया है कि काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व को हम उसके ऊपर ड्रॉ करके फिर हम बताते हैं IC1 IC2 IC3 से हम उसको शो करते हैं. ऑलराइट. Alright, so when we discuss the indifference curve, let's see the some properties of indifference curve. ठीक हो क्या? Here are the some properties of indifference curve. Number 1, an indifference curve slopes from left to right downwardly. Number 2, two indifference curves do not intersect each other. Number 3, it is convex to the region. Number 4, higher IC gives more level of satisfaction than the lower IC. Number 5, an IC does not touch any axis. Number 6, all ICs are not necessarily parallel to each other. ठीक हो गया? ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली हैं. 6 प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व में, हम देखते हैं मेनली, एंड लेट्स see the explained version of these properties. Number 1, an indifference curve slope from left to right downwardly. So this property implies that indifference curve has a negative slope. Indifference curve being downward sloping means that when amount of one good in the combination is increased, the amount of other good is reduced. This must be so if the level of satisfaction is to remain the same on the indifference curve. If, for instance, the amount of good X is increased in the combination while the amount of good Y remains unchanged, the new combination will be preferable to the original one, and two combinations will not therefore lie on the same indifference curve. Hence, indifference curve cannot be horizontal straight line with similar reasons. Indifference curve cannot be a vertical straight line nor upward sloping to the right, but indifference curve cannot be to the same shape too. Upward sloping curve means that the amounts of both goods increase as one moves to the right along the curve, so the only remain is downward sloping demand curve. ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे आप डायग्राम देख लें कि हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ना तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल में, ना ही वो स्ट्रेट लाइन होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो आप सेकंड फिगर देख रहे हैं इस तरह का भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होती. एंड थर्ड डायग्राम आप देख रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व जो है वो अपवर्ड मूविंग है, हमारे पास ऐसा आईसी कर्व नहीं ड्रॉ होता. ठीक है? आईसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डिमांड कर्व में होता है ड्रॉ. ठीक हो गया? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास. सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है तो इंडिफरेंस कर्व डिड नॉट इंटरसेक्ट विच ईदर अदर. अब हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं होते, उनमें स्मॉल सा डिफरेंस हमेशा रहता है. तो इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर एज हायर एंड लोअर कर्व्स शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सपोज टू इंडिफरेंस कट ईच अदर एट पॉइंट के. यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंडिफरेंस कर्व सपोज करें कि के पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस मीन्स दैट द पॉइंट के एंड टी विच आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व IC2 शो इक्वल सेटिस्फेक्शन. Similarly, points K and S which are on the same indifference curve IC1 show equal satisfaction. K is equal to T, K is equal to S, therefore S is equal to. इसका मतलब है हमारे पास S जो है वो T के इक्वल हो गया है. Since K is the common to both curves, point S and T show equal satisfaction, but this is contrary to our earlier assumption that points on the higher indifference curve show greater satisfaction.
then points on the lower indifference curve in order therefore to be consistent with our assumption different indifference curves did not cut or intersect each other. ठीक है, अब हमने देखा ना इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास जैसे जैसे वो हायर इंडिफरेंस कर्व हमारे पास आता है हमारे पास सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती जाती है. ठीक है, क्या हायर सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व देता है हर ऊपर बढ़ता हुआ इंडिफरेंस कर्व जो है. तो अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास हायर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करते, उनका एक डिफरेंस रहता है हर इंडिफरेंस कर्व में. IC1 IC2 IC3 एंड अप सो ऑन जितने भी इंडिफरेंस कर्व होंगे सब में एक डिफरेंस रहेगा. ठीक है, here is the third property, it is convex to the origin. अब वो कह रहे हैं कि वो convex to the origin होंगे, मतलब कि downward sloping. This and the very important feature of an indifference curve is that they are convex to the region and they cannot be concave. और वो concave नहीं होंगे. ठीक है, convex उनका एक जो slope आएगा वो convex में आएगा, concave में नहीं आएगा. ठीक है, a normal indifference curve will be convex to the region and it cannot be concave. Only convex curves will lend to the principles of dimensioning marginal rate of substitution. In case of concave curve, it will lead to increasing marginal rate of substitution, which is impossible. ठीक है, concave curve होगा इसका मतलब है हमारे पास marginal rate of substitution ज़्यादा होगा, इसका मतलब है ये impossible सी बात है. ठीक हो गया. In order to understand this more clearly, we have to study the exact purport and purpose of and significance in passing from one point to another or an indifference curve which is convex to the origin. ठीक हो गया. The indifference curve is convex to the region and the consumer passes from point A to B on the same curve to remain in the same level of satisfaction. While moving from A to B, the consumer give up y1 point or AC units of Y commodity in order to obtain x1 units of X commodities, for example CB units of X. ठीक हो गया. अब यहाँ पे आप IC curve देख सकते हैं which is convex to the origin. Here is the fourth property of indifference curve, which is higher IC gives more level of satisfaction than the lower IC. ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कि higher IC gives जैसे जैसे IC मूव अपवर्ड्स करता है ना, जैसे IC1 IC2 IC3, तो हर लेवल पे बढ़ते IC लेवल पे हमारी सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा से हम ज़्यादा गिव मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एवरी पॉइंट. ठीक हो गया. एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द लेफ्ट to the right of the preceding curve indicates higher level of satisfaction and the curve to the left shows lesser satisfaction. ठीक है, जो less होगा कम नीचे होगा वो less and then the higher level of satisfaction gives more level of satisfaction. This means that the indifference curve at a higher level from the axis shows greater satisfaction than the indifference curve at the lower level. This can be illustrated by having two indifference curves. In the indifference curve IC1 at point P, the consumer is having OM quantity of bananas and ON quantity of biscuits. ठीक है, दो commodities है हमारे पास bananas and biscuits. At point Q in the IC2, the consumer, though having the same quantity of biscuit, the quantity of bananas have increased from OM to OM1. And for example, at point Q, and the consumer gets larger quantities than the point P, and naturally position Q is preferred by the consumer than position P, as in the former he gets larger satisfaction due to the larger commodities. हमने देख लिया है कि IC1 से जब IC2 मूव किया है हायर IC है तो हमारे पास लार्जर सेटिस्फेक्शन आ रही है उसके ऊपर. ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारे पास हर बढ़ते IC के साथ आएगी. ठीक हो गया. अब ग्राफ में भी हमने देख लिया है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. इंडिफरेंस कर्व ऑन द राइट इज प्रेफर्ड देन द इंडिफरेंस कर्व ऑन द लेफ्ट. द कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू मूव अप इन द इंडिफरेंस मैप सो दैट ही कैन ऑक्यूपाई एज मच एज पॉसिबल द टॉप मोस्ट कर्व, एज द हायर कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लार्जर सेटिस्फेक्शन इन द डिफरेंस मैप. ठीक हो गया. एंड हियर इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एन IC डज नॉट टच एनी एक्सिस. ठीक हो गया. अब जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पहले देखी थी कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ. ठीक है, कन्वेक्स टू द रीजन होते हैं. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी एक्सिस पे टच नहीं करते हैं. ठीक है, ग्राफ में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि ना तो वो कभी एक्स एक्सिस पे टच करेगा ना वाई एक्सिस पे टच करेगा. IC कर्व हमारे पास ऐसा ड्रॉ
होता है, ठीक हो गया. So another property of indifference curve is that it will not touch to the x-axis or y-axis. This is born out of an assumption that the consumer is considering different combinations of two commodities. If an indifference curve touches y-axis at point P, it means that the consumer is satisfied with OP units of Y commodity and 0 units of X commodity. ठीक हो गया. This is contrary to our assumptions that the consumer wants both commodities, although in a smaller or larger quantities. Therefore, indifference curve will not touch either the x-axis or y-axis. But as the special case, it will touch the y-axis at point A. If the combination is between money and commodity, it would be mean that the consumer either wants various combinations of money and the commodity, or only OA units of money which give him command over commodity X. ठीक हो गया. अगर X एक्सिस पे टच करेगा इसका मतलब है वहाँ पे आपके पास Y एक्सिस की जो है सेटिस्फेक्शन वो 0 आ रही है. जब Y पे करेगा X की, इट मीन्स कि ये दोनों भी ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास है कि वो किसी भी एक्सिस पे हमारे पास टच नहीं करते, नाइदर एक्स नाइदर वाई एक्सिस. ऑलराइट. सो एट पॉइंट बी द कंज्यूमर हैज 1 units of commodity X and OA 1 units of money, and this gives the same satisfaction of having only OA units of money, which means command over X and other commodities. ठीक हो गया. And here is the sixth property of indifference curve. All ICs are not necessarily parallel to each other. ठीक है. हमने ये तो देखा था IC कर्व जो होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है, एक स्पेस होती है हर डिफरेंस कर्व में जो कि ये इंटरसेक्ट नहीं करते. तो अब वो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हों. ठीक है. लाइंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, कहीं से वो ज़्यादा डिफरेंस होगा, कहीं कम डिफरेंस भी हो सकता है. ठीक हो गया. Indifference curves are assumed to be negatively sloped and convex to the region. An individual can move to the high indifference curve, curve I2 to I3 until he reaches the saturation upon S, where his total utility is the maximum. If the consumer increases his consumption beyond X and Y, his total utility will fall, and IC is negatively sloped and converges to the origin. ठीक हो गया. But it is not necessary that slope of all curves should be at same as dimensioning rate of marginal rate of substitution between two goods cannot remain the same. Thus, they are not necessarily parallel to each other. ठीक हो गया. और वो कह रहे ज़रूरी नहीं है कि वो सब लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल ही होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस भी आ सकता है. ठीक है. कहीं से ज़्यादा डिफरेंस, कहीं कम डिफरेंस आईसी कर्व में. ठीक हो गया. यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई. हम 6 मेन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करते हैं आईसी कर्व में. ठीक हो गया. होपफुली आपको हर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ग्राफ की भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको साथ साथ दी जाए ताकि ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है. ठीक हो गया. सो हियर इज़ द क्वेश्चन, what does an indifference curve explain? ठीक है. ये indifference curve हमें explain किया करता है. ठीक हो गया. An indifference curve is used by economists to explain the trade-offs that people consider when they encounter two goods that they wish to buy. Because people are constrained by limited budget, they cannot purchase everything. Instead, a cost-benefit analysis must be considered. Indifference curve visually depict this trade-off by showing which quantities of two goods provide the same utility to consumer. For example, where they remain indifferent. ठीक है. indifferent commodities यूज करते हुए कैसे ग्रेटर से ग्रेटर सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर अचीव कर सकता है. ठीक हो गया. So here we end our lecture. Hopefully you will understand now what is indifference curve, what is indifference map, how we can draw the indifference curve, and many indifference curves on the indifference map, and hopefully you will understand all the properties of indifference curve which we learn in today's lecture. Alright, so thank you for being here. Thank you for listening the lecture, and if you have any query, ask me in the comments box. Alright, thank you. Take care of yourself, take care of everyone around you.
Like the video, share it, and subscribe the channel if you want to know about the other topics and videos about economics. Thank you. Allah Hafiz.